व्यूअर्स एंड दिस इज रंजीता नाथ गई फाउंडर RNTalks। आज हम फिर से आपके साथ आए हैं हर शाम के जैसे एंड टुडे आवर गेस्ट इज मिस श्वेता डावड़ा एंड she is our RSVKA Karmaveera awardee. And not only this, she's also a founder of Brilliant Minds, running successfully for past 16 years, where she teaches handwriting improvement, jolly phonetics, uh, French grammar, Olympiad, how to tackle Olympiads, NALTAs, and also provides mentoring to children from grade 1 to grade 10 on all subjects of the board exams. So, without wasting time, I'll invite Ms. Shweta Davda over here. So, Shweta, आप इतना कुछ कर रहे हैं and phonics is the same thing if I'm not wrong, and so Mm. मेरे को phonetics बोलने की आदत है, so I'll stick to phonics and phonetics कुछ होता रहेगा. So how do you do this? Means phonics is not very easy to teach. उसका आपको बहुत carefully and correct बताना पड़ता है. So do you really think that phonics is needed by all children from grade 1 to grade 10, or at a particular stage it is needed more, or how do you correct it? First of all, good evening, everyone. And thank you so much, Ranjita ma'am, for bringing us to this platform. And really glad to share this informative platform where we meet like minded people and the impressive personalities like you. Thank you so much for bringing me on board. And talking about phonics, ma'am, in the early days, there was no such concept of phonics. But nowadays, it has become a compulsory subject in school. Now, what is the difference between a phonics and the normal English alphabets, what we talk about? I'll just share a little bit of differences for the people or the viewers who want to know about this. Basically, in alphabets, we talk about 26 alphabets, that is A to Z. What we teach to the younger ones when they are in the play school, they start from the nursery. That is the Yeah, basic concept. But when we talk about the phonics, phonics are the kind of the sounds which is helpful for the children to catch. Okay, it's basically a set of six sounds. Okay, with a seven group each, and there are in total 42 sounds which a child needs to learn. Now, how does this sounds help? Many a times, if you ask to a senior KG child something what we talk about aeroplane, say for example the child is not aware about the word aeroplane or is not about to write the word aeroplane, but with the help of this phonics the child will break, blend the word, and child is able to write such binary trinary words with a very ease. So phonics help them to frame their own sentences, to blend the words, to understand the concepts of English in a more better way. Their language becomes more polished with the help of phonics. so ma'am, श्वेता, आप ओलंपियाड की भी तैयारी कराते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल So बिल्कुल. Olympiad on all subjects from 1 to 10? Yes, not from 10th. It's basically from the grade. I think mostly the children of 5th standard do start appearing for Olympiad, for NELTAs, because early concepts are not clear to them. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में ही नहीं होता है कि ये क्या है, ये किस तरह की एग्जाम्स है. So parents preferably start with 5th grade and then it is till 8th or 9th. Mostly 9th के बच्चे भी कम हो जाते हैं because 9th and 10th का जो study pressure उन पे होता है, so they avoid giving these exams because these exams are not related to the school. These are the exams which they have to give on a national level or some other level, state level. So ये exams का importance 5th to 8th grade वालों के लिए ज़्यादा होता है. This is like an add-on certificate to them. इसका ज़्यादा यही कुछ मैं महत्व. आपसे हाँ, यही Yes मैं ma'am. पूछने वाली थी कि why should a child do Olympiad or NELTAs, and what is the difference between Olympiad and NELTAs, and is it required, or a child can do with it, या फिर required है तो वो कैसे उसको help करता है आगे? I'll give you a short example on this. आप रोज दाल चावल खाते हो, कितने दिन खाओगे?
कभी लगता है ना कुछ एक ऐड कर दे, कुछ एक सैलेड की रेसिपी ले लेते हैं या एक पापड़ी बनाकर खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? जस्ट टू ऐड स्पाइसेस टू आवर लाइफ. So same way education system is the same. We have particular subjects which we go to the every grade and we study the same subjects. But giving a nail task is a kind of a exam in English which a child has to appear. वो सिर्फ English vocabularies and subjects को लेके होता है, and that is a certificate which is add-on certificate to your child's experiences, and also something where वो एग्जाम्स पहला चीज इनिशियल स्टेज में स्कूल्स लेते हैं. ओके, नेल्टास एग्जाम्स आर टेकन इन द स्कूल इटसेल्फ. सेंटर इज द स्कूल इटसेल्फ. ओके, उनके तीन तीन लेवल होते हैं. तो पहला होता है बेसिक लेवल, जो नॉर्मल स्कूल्स में लाइक इट्स लाइक अ सरप्राइज टेस्ट फॉर द चाइल्ड. एक छोटा सा बुकलेट बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए, एंड बोला जाता है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डेट द एग्जाम्स आर scheduled for NELTAs. Children are very happy. I have mostly seen children giving happily this exams because it's like something different for them. वो नॉर्मल इंग्लिश स्टोरी बुक्स को छोड़ के या ग्रामर पार्ट को छोड़ के वो कुछ अलग दे रहे हैं, और ये एमसीक्यूज पैटर्न में होता है जहाँ पे सिर्फ उनको एक करेक्ट आंसर टिक करना है, दैट्स ऑल. वो लेवल क्रॉस करना इज वेरी इजी. देन दे गो टू द नेक्स्ट लेवल जिसका सेंटर्स उनको दिया जाता है. दे हैव टू गो टू सम अदर स्कूल एंड अपीयर फॉर दैट. The benefit of this exam is your child will get a good learning experience. Clearance is not important. My only request to the parent is don't always look upon the grades. Don't always look upon कि आपका बच्चा कितना percentage level score करके आया. What is important is that how much experience your child gain. I have seen many of the children who are in 10th grade but have a stage fear. They are not confident speakers. What is the reason? Because उनको कभी experience हुआ ही नहीं है life में. When your child goes to some other school, meets some other teachers, have this experience of appearing for the different exams, no matter if they fail. Firstly, failing is not a word which is in my dictionary. I always tell my children that failures नाम का कुछ चीज होता ही नहीं है. It's always like you learn. Whenever you are not able to attain the marks or the result as per your expectation, don't give up. Because always take it as an experience कि आपने कुछ सीखा और आप आगे बढ़ो. Do it again and again till you don't reach your expectations or your goals. And why you have to set your expectations? Because without expectations, you can never set your goals. So वो goals attain करना, वो target attain करना, वो बच्चों को बचपन से सिखाया जाए, तो एक चीज होती है कि 9-10 तक वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे. Many of the parents come and complain to me, my child is not studying, is not serious with the studies of ninth, with the 10th. What is the reason? Because they don't know what they have to do ahead in their life. They are completely clueless about their life because this kind of experiences are not given to them. This is kind of a motivation you give to your child, that go to some other school, experience something different. No matter if you lose, but what was important to gain a good experience and learn something. आई एग्री विद यू श्वेता. हम पेरेंट्स ना ग्रेड्स और मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. व्हाट वी फॉरगेट इज इन द प्रोसेस. इट इज अ होल प्रोसेस. हम एंड पे फोकस करते हैं एंड नॉट ऑन द प्रोसेस. जब बच्चा इसके लिए पढ़ता है, प्रिपेयर करता है, यू नो, वो बच्चा वैसे किताब कभी नहीं खोलेगा. बट वेन ही गोस फॉर ओलंपियाड्स और नेल्टास, वो उसको क्लियर करने के लिए 10 चीजों पे रिसर्च करेगा, 10 चीजें Yes, एक्स्ट्रा पढ़ेगा. ठीक है, अगर मैंने मुगल्स की बात की है तो वो सिर्फ मुगल्स में नहीं होगा ना, मुगल्स के आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा yes, कि yes, बाय चांस ये आ गया तो वो आ गया तो. और जब वो पढ़ने लगता है तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो इंटरेस्ट उसको और नॉलेज रिटेन करने में मदद करता है. दिस इज व्हाट द पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. correct, व्हाट correct. इज ग्रेड क्या आया, पास या फेल, मैंने काट दिया इधर या उधर, बीच में किधर नहीं. वो जो प्रोसेस में बच्चे ने सीखा है, दैट इज एंटायरली मिस्ड बाय द पेरेंट्स, which I think Absolutely. that is what you're saying, that other than the grades, whether you pass or you don't pass, means whether you make it or you not, is not important. What is important is what you have learned en route. Yes, That yes. is more important. I think that is what gives the challenge and impetus to move forward.
and prepare Yeah. to study for JEE and like NEET kind of exams. CET, NEET, yeah, yeah. And more importantly, let them compete with themselves. Moreover, I have seen parents competing with each other. You know, Yes. nowadays parents are more competing. मेरे बच्चे को 95 आया, मेरे बच्चे को 98 आया. They keep putting up the status. They keep putting up the status and profiles on the Facebook and Insta. And just tell me one thing. Have you ever asked your child that your child is comfortable with this stuff? Many a times your child is secretive. Many of the times your child is introvert. Your child doesn't want the world to know. I have even seen a child scoring 98 but doesn't want to show the world that, oh, I have scored 98. Child is like, what if 98? Because this is just the start of my career. This was not the end of my career. I have to work more hard after this 98. And my main journey starts from this stage where I Yes. will be a science student or whatever subject's particular field I chose and where I land up in my life. That is more important. If in future I become a doctor or I become an engineer, that is where I had achieved my dreams. Just by posting that 98, parents feel that oh मेरे बच्चे ने बहुत कुछ कर लिया. But I have seen rather child should compete with himself or herself. And how does this competition starts when your journey starts with interrogation or when you are more inquisitive about the things, how, which, when you ask that question to yourself, where I am going, what I want to do, how will I achieve this? Don't parents, like mostly to my concern with the parent is, don't push your child where your child doesn't want to go or is not comfortable to go. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा इंजीनियर बने और साइंस ले, but have ever you ask your child what your child is looking forward to? Because there are number of streams and there is a wide scope, what I can say, related to the subjects, where if you go and analyze the things you will come to know कि हमारे जमाने की तरह नहीं है कि कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस. Nowadays there are so many, what I can see, different fields are open up for them, and the sources from where they can come to know कि वो क्या करना है उनको आगे. There are number of career counselors who can help you and to reach somewhere, or they can embark with your journey somewhere and help you to achieve your goals. So take help from them rather being competitive. आजकल एक और चीज मैंने देखी है, रादर इट्स लाइक काइंड ऑफ ड्रम्ड इनटू आवर हेड्स कि सबसे पहले साइंस फिर कॉमर्स, जिसको कुछ नहीं आता ना 30% वालों के लिए आर्ट्स है. हाँ. So it's a big battle not only for parents. मीन्स एक मैं घर बताती हूँ आपको जहाँ पे पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है और बच्चा है. ग्रैंड Hmm. पेरेंट को पता है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है. Hmm. वो कहता है साइंस लो, कुछ नहीं होता तो कॉमर्स लो, अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं. उनको तो मुंह खोलने में भी शर्म आती Ah, है. एंड yes, देन द yes, ग्रैंड पेरेंट्स प्रेशराइज द पेरेंट्स टू प्रेशराइज द चाइल्ड. You correct. get the point. I have seen it myself. I have Yes, seen it myself. क्योंकि मेरे बच्चे भी उस एज से निकले हैं. एंड क्यों आई डोंट ब्लेम द ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने वो दुनिया देखी है और वो जिंदगी और वो दौर देखा है. correct, हम correct. इस जमाने के हैं, हमने वो भी देखा है, हमने जो आज चल रहा है वो भी देखा है, और आगे Yes, जो आने वाला है बच्चों के साथ हम वो भी देख रहे हैं, राइट. बट दे आर आउट ऑफ द लीग. तो yeah, उनकी स्क्रीन ना वो 3 घड़ियों पे, 3 डॉट्स पे अटक गई है. अटक गया है. Third dot is non-existent for them. What they don't understand actually is अगर आप आर्ट्स में जाते हो, so you have a wider field. Arts is no Yes, longer just history, civics, political science. आर्ट्स में साइंस yeah, भी आता है, कॉमर्स भी आता है, मैथ्स भी आता है, और बहुत सारी चीजें. मीन्स बच्चा आर्ट्स लेके आईएफएस के लिए जा सकता है या आईएएस के लिए जा सकता है. साइंस इज नॉट रिक्वायर्ड. what do you say to that? You are a child psychologist, you are working in this field. मैं तो चलो 4 साल हो गए हैं एक्टिव एजुकेशन से, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया. बट एज अ लाइफ कोच आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज मेरे ऊपर निकल चुका है ना. मैं भी एक मदर हूँ और मैं भी इस दौर से. yes, yes, सो ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेशर पेरेंट्स पे, पेरेंट्स का प्रेशर ग्रैंड पेरेंट्स से बचने के लिए बच्चे के ऊपर. बच्चे के ऊपर. Parent is trying to prove the grandparent कि I am a very good child,
and forcing the child to become a very good child for to please the parent, to help please the grandparent. ये गंदा Correct. वाले chain जो है ना, this has to be broken, I think, श्वेता, at Yes. some point. और ये सिर्फ पेरेंट्स तोड़ सकते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन के बीच में एक ये जो रस्टेड चेन है ना, this Yes. only the Yes. parents can break for by standing up for the kids. So do you have Correct. cases like this? Because you are a counselor also, you're a child psychology किया है, you counsel children from grade 1 to grade 10. तो ऐसे Yes. cases आए हैं, and how have you then sorted them out? Yes, ma'am. Definitely, I would say, as I told you, parents are more competing. The world has changed, but certain things have not changed. Yes, I do get such kind of a children who are pressurized by their parents, who are pressurized by their grandparents about their studies or about their what I can say, the goals, what they want to achieve in their life. Even if child says that मुझे ये करना है, तो parents बोलते हैं नहीं, ये क्यों करना है, यही करना है. हमारे घर पे ये तो किसी ने किया ही नहीं है. So it becomes really difficult for me to make them understand कि your this is completely different generation. You cannot link this generation with your generation. आपने क्या किया वो आपका choice था. See the generation we belong to, okay, the one which was of 80s and 90s. We were the, I think we are the only the last generation जिसने अपने parents की सुनी, अपने grandparents की सुनी, and शायद अभी हम हमारे बच्चों की भी सुनते बच्चों हैं, की भी and सुन रहे हैं. उनके, हाँ हाँ, and उनके आने वाले generation की भी हम सुनेंगे. So you cannot compare your generation with them. Moreover, being a parent, try to be a friend to your child. I don't say कि parent बन के मत रहो. Parent आपका role है, वो आपको play करना है. But try to understand when to be a friend and when to be a parent. When to be a friend when your child is in need. You should have that much of ओपन कम्युनिकेशन और आई कैन से इतना अपने बच्चों के साथ एक लेवल रखो कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप तक आए ना कि बाहर जाए. Many a times I have seen children taking consultation from the relative, from friends friend कि ये situation आ गया अब मैं क्या करूं. Why they can't be that open up with their parents? What is the reason? I understand being a parent, there are certain boundaries which you cannot cross. Don't cross. As I told, you should know the correct role which you have to play as a parent and as a friend. एक ऐसा लेवल रखो कि आपका बच्चा फ्रीली आपसे आके बात करे. देश एंड जब वो बात कर रहा है और आप जब फ्रेंड बन के उनसे बात कर रहे हो, देयर शुड नॉट बी जजमेंट. You should not judge your child. There should not be any advices, rather give suggestions. And when you openly listen to your child with an open mind, I can say, तो आप में भी शायद कहीं ना कहीं वो समझने की एक शक्ति आ जाती है कि बच्चा ये क्यों बोल रहा है. Empathize with your child. I'm not asking for sympathy, but empathy should be there with every parent. Why my child is up to this? What is the reason? Why my child is not looking forward to this? I have seen like कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना मैथ्स अच्छा नहीं लगता. पेरेंट बोलता है नहीं मैथ्स तो करना ही पड़ेगा. As you know the current pattern of our education where child can choose between a maths or a science or either opt for both or either opt out for both. Many of the parents start pressurizing. मैथ्स क्यों नहीं लेना है? कल को सीए करेगा तो मैथ्स के बगैर क्या करेगा? कल को साइंस नहीं लेगा तो क्या करेगा? अरे बट हैव यू एवर आस्क योर चाइल्ड कि बच्चे को क्या करना है? आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि साइंस क्यों नहीं लेना है. डॉक्टर बनना है तो साइंस क्यों नहीं लेना है, बट किस चीज का डॉक्टर बनना है ये भी पूछ लो. सीए करना है तो अकाउंट्स तो चाहिए, मैथ्स तो चाहिए, बट हैव यू एवर कंसल्टेड योर चाइल्ड तुमको सीए करना है, तुमको सीएस करना है, क्या करना है? First, have that set that goals with your children. Talk to them about their dreams. Talk to them about what they want in their life. As a parent, see, I'm also a parent. I am a mother of two. My one of my child will turn 17 in a month, and my other is 11-year-old. I have given that much of opportunity to my children to think about their own goals, to set their own goals, and
to think about what they want to become in their life, being what I can say, they don't have to be under my pressure. किसी का भी pressure लेने की जरूरत नहीं है, because I know the potential my child holds. Yes, my daughter is a very good child with her studies. She is a very what I can say, ये 17 साल में मैंने उसको कभी नहीं बोला कि आपको इतना पढ़ाई करना है. Like she was very disciplined child. Maybe because I am disciplined, so what is she observed in me, she followed that. कभी भी उसको मैंने अपने होमवर्क को लेके रिमाइंडर्स नहीं दिया. बेस्ट चाइल्ड का अवार्ड जीता है. Many of the awards she has also won in her school time. When it was her time to decide what she has to do in her life, she was quite confused. Ki, my professors are asking me to take a science because I'm very good with my studies. I said, don't listen to anybody because karna tumko hai. Your professors are going to guide you. Yes, they are your caretakers, they are your mentors. I understand their concern being a professor. कि कल को आप कुछ अच्छा करोगे तो उनका नाम अच्छा जाएगा. आई अग्री विद दैट बीइंग अ प्रोफेसर, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ कॉल ऑफ योर लाइफ. कल को ऐसा नहीं हो कि आप साइंस पे आ जाओ, 1 साल के बाद आप रिग्रेट करो क्यों लिया. वो रिग्रेशन नहीं चाहिए मुझे. या तो जबरदस्ती का पढ़ाई, यू नो, जस्ट दैट बाय दैट स्ट्रेस दैट ओ हाँ, पीपल आर एक्सपेक्टेशंस आर हाई ऑन मी, सो आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रूव. नो, you are not there to prove anything to anyone. Yes, my only concern is you have to be independent. To both of my kids, being a male, female, daughter, son, whomsoever, I never have that discrimination between my child. Even my son is 11 and he helps me with my household chores. I never tell him that तुम लड़के हो तुमको ये चीज नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? If as a parent I am expecting my child to go abroad after few years, so अगर वो थोड़ा बहुत किचन का काम या घर का काम सीख रहा है तो बुराई तो कुछ भी नहीं है. Why it is only that, you know, we are living in still that patriarchal society where we are made to understand लड़की को ये करना है, लड़के को ये करना है. In my house there are no discrimination from my side. I am neutral to both. My son इनफैक्ट looking at my daughter, yeah, नहीं वही he, मैं कह इनफैक्ट कोविड हैज टॉट अस सो मच कि सबको yes, मिलके करना है, सारे yes, काम सबको बांट के करने हैं. देन कोविड खत्म होते साथ ही अगेन इट इज लाइक तेरा काम एंड तेरा काम. सो लेट अस yes, COVID was those 2 years of COVID was a very bad phase for everybody. Many people lost so many dear ones. But yes. कहते हैं ना, there is a silver lining in every cloud. So the silver lining in COVID was, I think, बहुत सारे small businesses progress करे, everything Hmm. became online. जिनको ऑनलाइन का मतलब ही नहीं पता था वो तक ऑनलाइन आने शुरू हो गए. जिन Yes, बच्चों को yes, स्कूल में जाके पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे, अपने इधर उधर नेबर्स के साथ बैठ के ऑनलाइन ट्यूशंस लेने शुरू हो गए. घर yes. में सब लोग काम करना शुरू हो गए, इकट्ठा मिल बांट के. So many good things also came out of it. Happened. Yeah, Absolutely. we learn to appreciate. Our children got more savvy, and with them, we also got to become more techno savvy. Absolutely. जिन टीचर्स Absolutely. को ऑनलाइन क्लासेस आती ही नहीं थी, वो जूम पे एक्सपर्ट बन गए सडनली. जिसको एक्सेल शीट नहीं आती थी, जिस टीचर को, जिसको एमएस वर्ड खोलना नहीं आता था, वो जूम पे लेके डॉक्यूमेंटेशन कर, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा I am one है. of them. So many positive things came out. So let us, I think, Absolutely. at one stage as parents, we should let the child go and decide for themselves कि उनको क्या Yes. करना है. We are Yes. nurturers, so we should not try to mold them जबरदस्ती. Rather, we should nurture them. So जब मैं Ah, nurture की you बात, can put your suggestions forward. Like, what yes, if you do this? But there is always a language, you know. I always, when the people come for counseling, I tell them, mark your language, mark your words. You know, because many a times, आपको नहीं पता होता है, but आपके बच्चे आपको सुन रहे हैं. But when you speak and when you say, मेरे बच्चे ने ऐसा कैसे बोल दिया, but did you realize कभी आपने ये चीज बोली होगी? होगी होगी. आप बोलते हो मेरा बच्चा नेगेटिव है, बट आप ही नेगेटिव बोल रहे हो तो बच्चा नेगेटिव बोलने ही वाला पॉजिटिव है. कहाँ से निकलेगा? You keep on telling my child is not good. I have seen parents telling that to teachers also, to the society people also. My child is very bad with studies. मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है. क्यों? ये चीजें बाहर क्यों लानी है? Rather than Exactly.
Affirm your child. Oh, today you did 1 hour of studies. I'm so grateful to you. I hope you make it more 15 minutes tomorrow. दूसरे दिन बच्चे को मोटिवेशन होगा कि मुझे 15 मिनट और पढ़ना है। वो बच्चा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला रेदर देन नेगेटिव स्टेटमेंट। When you True. go out to some relative or to the society people, affirm your statement saying, my child is a very disciplined child. My child studies pretty well. My child is a very good child. Rather than saying पढ़ता ही नहीं है. Complain क्यों फोकस करनी ऑन है? हिज गुड थिंग्स ना, फोकस ऑन हिज Yes, गुड थिंग्स। और दूसरे मैं ये बोल रही हूँ श्वेता, बिकॉज वी आर नर्चरर्स एंड यू आर एन FSSAI न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट yes, ऑल्सो, ma'am. so you are a Yes, counseling coach, you are a nutrition specialist, so dietitian. would you Yes, dietitian also, तो यहाँ पे कुछ टिप्स, बिकॉज अभी why am I asking this question is because ये एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, ये yes, डिसीजन मेकिंग का टाइम है। बहुत बच्चों से बोला जाएगा 11th 12th में अपना करियर छाटो, जो 11th 12th कर गए हैं उनको बोला जाएगा एग्जाम्स में बैठो, आगे का करो। सो ये बहुत जो कहते हैं ना एक बच्चे के लिए मेंटल स्ट्रेस और बहुत yes. कठिन टाइम है, इवन फॉर पेरेंट्स, इवन फॉर Correct. पेरेंट्स, और वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे से। ठीक है, सो व्हाट न्यूट्रिशन बिकॉज वुड यू रेकमेंड फॉर Sure, पेरेंट्स टू गिव टू द चाइल्ड सो दैट उसका मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, अदर देन प्रॉपर काउंसलिंग, अच्छा sure. खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे ना, वी हैव टू बी फिट Correct, ऑल्सो। correct. मेंटल हेल्थ तो चलो हमने बात कर ली, व्हाट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना हमें देता है, Hmm. कैन यू थोड़ा सा उसके बारे Sure, में sure, ma'am. suggest? Ma'am, being a dietitian, I always tell people that mindful eating is very important. Now, what is mindful eating? Mindful eating मतलब आपने आजकल के बच्चों के पैटर्न, बच्चों में ये पैटर्न देखी होगी कि खाते हैं मतलब एक एबनॉर्मलिटी होती है। कुछ चीजें खा रहे हैं तो खाते ही रहते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कितना खा लिया। कभी कभी होता है कि जंक फूड्स का बहुत ज्यादा आजकल डिमांड हो गया है। क्यों डिमांड हो गया है? बिकॉज माइंड इज नॉट सपोर्टिंग द बॉडी, और यू कैन से बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग द माइंड, वाइस वर्सा, वट एवर यू कैन से। एक चीज, एक टाइम का मील जो आप दे रहे हो वो प्रोपोर्शनेट मील दो, वो बैलेंस मील दो। Okay, include everything in the diet: micronutrients, macronutrients, carbs, vitamins, everything. The dairy product should also, हमारे में dairy product भी एक कटोरा दही दे दो। Okay, even that will give the filling to the child. छाछ, अभी समर है तो छाछ का कंटेंट, वाटर इंटेक बढ़ा दो। डिपेंड्स अपॉन द सीजन। ओके, वी गाइड देम। नाउ अभी जो एग्जाम्स का फेज चल रहा है, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू स्टडी वेल, प्रिटी डू गुड इन देयर एग्जाम्स, क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसा चाइल्ड का डिमांड फॉलो कर लेते हैं, या चाइल्ड के साइड से वो ब्लैकमेलिंग हो जाता है कि मेरा एग्जाम्स है, मुझे ये बना दो, मैं बाहर तो नहीं खा सकता। तो मॉम इज लाइक, ओके घर का खाओ, घर का खाओ। अरे बट घर का भी खाओ, बट वो जंक फूड आपके बच्चे को एक लेथर्जिक एनर्जी दे रहा है, वो आप लेथर्जिक एनर्जी मत दो। आप बोलोगे कि बाहर का बर्गर नहीं खाया, घर पे बना के दे दिया, बट बर्गर इज अ बर्गर। दो बाहर का या घर का, what will happen? You are giving amount of fats to your child. Your child may sleep while reading or while preparation for the exams. And then you आके आप बोलोगे अरे ये तो सो गया, पढ़ता ही नहीं है। पर कैसे पढ़ेगा? आप इतना फैट्स कंटेंट अपने बच्चे को दे रहे हो। Meals should be lighter. Many a times I have seen children who are good at studying at night. दो तरह के बच्चे होते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं सुबह, उनको सुबह उठा के पढ़ा लो वो अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ होते हैं जो रात को पढ़ा लो, रात को अच्छे से पढ़ते हैं, बराबर है। तो जो रात को पढ़ रहे होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है, दे नीड समथिंग टू मंच। फॉर मंचिंग देर आर मेनी फ्यू ऑप्शंस व्हाट आई कैन सजेस्ट। पॉपकॉर्न्स दे दो, मखना दे दो। मखना का रेसिपीज इज सेम एज पॉपकॉर्न, just a pinch of a turmeric and salt, and just roast it with a half tablespoon of ghee. you know क्वांटिटी एक बोल होता है तो हाफ टेबल स्पून ऑफ घी रोस्ट कर दो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉपकॉर्न एंड हेल्दी थिंग टू ईट एट नाइट। अनदर थिंग इज यू कैन गिव द नट्स, जैसे कि नट्स में आप चना या रोस्टेड पीनट्स या कुछ ऐसा दे दो। ओके, बट दैट टू अ बोल, वो भी भर भर के नहीं देना है।
उसका भी एक क्वांटिटी होता है कि एक बोल दे दो, छोटा सा बोल में डाल दो. Khakra is a roasted khakra are the good options. Okay, and water intake is very important. Keep your body hydrated because dehydration, summer season, time for dehydration, बराबर है, time for exams. So the more important thing is to hydrate your body because जितना आप पानी पीते रहोगे उतना level of oxygen will go into your brain and your brain will be active. Watermelon ले लो, watermelon है, musk melon है. It's the best season to eat fruits because this fruits have 80% of water content in them. That will keep your body lighter. जितना आपका body हल्का feel करेगा, उतना ज़्यादा आप active रहोगे. That is mindful eating. 7 to 8 hours of sleep, very, very important. No matter exams are there, but one time of good sleep is important. प्लान योर स्केड्यूल, यू नो कैसे करना है, कितना सोना है, कब खाना है, कब पढ़ना है. जब एक टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. मैम श्वेता, जाने से पहले श्योर एक मैम. मेरा क्वेश्चन है। जैसे मैंने देखा है, मेरे अपने घर में देखा है, जब भी लाइक माय डॉटर गोज, मैंने अब तो नहीं खैर, बट जब तक वो एग्जाम्स दे रही थी, उसका क्या होता था, खाना पीना ही छूट जाता था। वो इतना मेंटल स्ट्रेस में आती थी ना कि कुछ भी खाने को दूं, शी वुड प्यूक इट आउट। कुछ भी खाने को कभी भी दूंगी ना, जब वो पढ़ रही होगी, उसको जिससे स्ट्रेस लेवल, जैसे शी यूज्ड टू प्यूक इट आउट, आई एंजाइटी. अंडरस्टैंड एंजाइटी इतनी हो गई है कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो शी कुड ओनली डाइजेस्ट एन एग, दैट इज ऑल। पूरा दिन में मैक्सिमम एग एग खा लिया, अगर मिल्क दे दिया तो दूध तक बाहर। माय सिस्टर इन लॉ ऑन द अदर साइड, उनका ये था कि वो बिल्कुल खाने पीने से हट जाती थी, वो सिर्फ दूध पे जिंदा रहती थी जब तक हम्म. एग्जाम्स। सो इज देयर समथिंग लाइक, ऐसे बच्चों के लिए डू यू गिव एन ऑल्टरनेटिव? दिस इज माय यस. लास्ट क्वेश्चन यस. बिफोर वी एंड, बिकॉज तरह तरह के बच्चे और तरह तरह की प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को यस. आती है। सो No, ऐसे definitely my job is to help and I will do that. That's completely fine, ma'am. See, first thing, ये anxiety level को आपको decrease करना है. ये आप कैसे करोगे? Being a parent, you get a timetable from the school. आपको पता है कब इनकी terms आ रही है. पहले से, अभी तो schools वाले पहले से दे देते हैं. पूरे साल का आपके पास हो जाता है schedule, क्या कब आने वाला है. You know that your child is exam conscious. You know कि anxiety level वो time पे बढ़ेगा. Okay, just 15 days priorly, calm and soothe the mind of the child, saying that everything is better. Whatever you do, as a parent, we are there to accept. Okay, आपको कोई एंजाइटी नहीं बढ़ानी है. आपके प्रिपरेशंस आप 90% करो, then 10% is your luck which will favor you. ओके, उनको पहले से ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस दो कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो. कहीं ना कहीं वो नर्व, वो ब्रेन की जो काम नर्व्स है जो हाइपर हो गई है वो काम हो जाएगी. जब नर्व्स काम होगी उनका ब्रेन एक सैचुरेटेड पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. ओके, उसके बाद स्टार्ट डे विद अ लेमन वाटर, बिकॉज ये लेमन वाटर उनका प्यूकिंग थोड़ा एक लेवल तक कम कर देगा. जब ओके, उनकी बॉडी वो लेमन वाटर को अच्छा, व्हाट आई कैन से, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो लेमन वाटर डाइजेस्ट अच्छे से कर रहे हैं. देन यू सजेस्ट देम सम फ्रूट्स. ओके, सम, व्हाट आई कैन से, सिट्रिक फ्रूट्स. से फॉर एग्जाम्पल, या अगर सिट्रिक फ्रूट्स का भी सीजन नहीं है तो एक बनाना दे दो, एक छोटा सा इलायची केला दे दो, क्योंकि वो उनको फिलिंग देगा एंड उससे शायद प्यूकिंग नहीं होती है. क्योंकि लेमन वाटर डाइजेस्ट हुआ तो बनाना भी होगा. फिर धीरे धीरे गिव अ टैक, नाउअडेज वी हैव अ टेट्रा पैक्स ऑफ आईएस, अपना ये व्हाट आई कैन से, सॉल्यूशंस होता है शुगर एंड सॉल्ट का. ओके, तो वो टेट्रा पैक्स आते हैं, इजीली अवेलेबल है मेडिकल्स में, मार्केट में. वो उनके बैग में डाल दो, उनको बोलो कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये सॉल्यूशंस आप ले लो. ओके, वो फ्लेवर्ड होते हैं, तो उसमें भी ऑरेंज है, एप्पल है, वट एवर फ्लेवर दे आर कंफर्टेबल, गिव देम. इससे क्या होगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा. ऐसा जो एनर्जी लेवल उनका नहीं खाने से जो डिक्रीज हो जाता है, वो ये चीजों से कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आप एक एक घंटे में उनको कुछ दे रहे हो. करेक्ट. सो ये चीजें होती है.
नाउ टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको लगता है कि दूध ही है जो उनको एक्टिव रख रहा है, ये उनका माइंड सेट हो गया है। तो ब्रेक दिस चेन, जस्ट 15 days प्रायर, वो दूध का ग्लास देने के साथ उनको एक बिस्किट दे दो, बोलो हैव दिस। जब उनका बॉडी ये एडजस्ट करने लगेगा, उनका माइंड भी एडजस्ट करने लगेगा। सो ड्यूरिंग एग्जाम्स व्हेन दे गो आउट विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, गिव देम वन ग्लूको बिस्किट, से कि ये खा लो, इससे आपको अच्छा लगेगा। होल्ड देयर हैंड्स, calm them out saying you are good and you are definitely going to do the best. ये 15 दिन से ये एफर्मेशन आप बोलना स्टार्ट करो, वो डेफिनेटली माइंड बॉडी और ब्रेन तीनों पे काम करेगा। बिकॉज व्हेन चाइल्ड इज एंजाइटी में होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि ये एंजाइटी है, बट वी एज अ पेरेंट वी नो। छोटे छोटे गैप्स पे फ्रूट्स दो, पानी दो, फ्लेवर्ड वाटर दो, कुछ जस्ट नहीं बी तो अभी कंसिस्टेंट सौंफ इन का पानी दे दो, कूल देम आउट, यू नो, दैट विल हेल्प। श्वेता, मुकेश जी का एक है क्वेश्चन. He हाँ, says, but what if the suggestions that the parents give to are taken as directions by the child? ओके। What to do then? See, when your child is already taking it as a direction, I think your child is aware what he or she has to do in his life. Okay, that means he or she is asking only for the suggestion. होते हैं Right. ना कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है उनको क्या करना है, बट दे डोंट डिस्कस, दे डिस्कस व्हेन दे And आर आस्क्ड। yes, and maybe they just want some suggestions from us to make up their यस, mind कि उन्होंने एब्सोल्युटली, ये दैट्स व्हाट आई सोचा है. सेड। यस। तो से मैं अपने केस लेती हूँ. लाइक व्हेन आई वाज इन 10th 11th एंड मेरे को हाँ। स्ट्रीम चूज करना था, सो माय आई वाज वेरी गुड. लाइक माय फादर वाज अ डॉक्टर एंड मेडिकल टर्म्स मेरे को अच्छे से पता थे. मैं फर्स्ट एड हम्म। में बहुत इंटरेस्टेड थी एंड आई यूज्ड टू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स. एंड जिसको भी चोट लगती थी, मेरे एक पट्टी बांधने का बैग होता था, फर्स्ट एड बॉक्स में निकल पड़ती थी. So my ओके। parents obviously thought, both of them being doctors, I'm coming from a family of doctors ओके। and lawyers. So they but naturally thought कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी. And somehow मेरी कुंडली में भी पंडित ने लिख दिया था कि ये तो डॉक्टर बनेगी. So you can imagine. ठीक है. So वो टाइम पे I had gone to the market with my father and तब पापा ने पूछा, और बेटा जिंदगी में क्या करना है? And I said, पापा डॉक्टर छोड़ के सब करना है. And I can फील पापा का हाथ एकदम थोड़ा-सा टाइट हो गया था. ही गॉट अ लिटिल टेंस्ड कि मैंने ये क्या बोल रही है, लाइक हम्म। इसने तो बनना है और ये ना बोल करेक्ट। रही है. देन ही सेड, तुमने क्या सोचा है? सी देन ही सेड, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. मेरा माइंड मेड अप था. मेरा माइंड मेड अप करेक्ट। था कि मैंने आर्ट्स में जाना है एंड हम्म। आर्ट्स में जाके मेरे को फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट जैसी चीज को फॉलो करना है. आई वांटेड टू बी इन द मोर ऑन ओके। द क्रिएटिव साइड. यस। क्रिएटिव मेरे को करना था और वो साइंसेस में हम्म। नहीं होता था. हम्म। हम्म। तो देन पापा सेड, बेटा आप वेटनरी में जा सकते हो, आप इसमें जा सकते हो, आप उसमें जा सकते हम्म। हो, गायनी में जा सकते हो. तुम मैथ्स फिजिक्स की क्यों चिंता कर रही हो? ऑप्शंस हैं. So he kept on giving me suggestions, but when I heard those suggestions, then I just told him, I said, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है. And but naturally that came as a shock to my parents because creative drawing, fine arts, commercial art, advertisements, हम्म। advertising, ये सब मेरे पेरेंट्स ने कभी देखा ही नहीं था. करेक्ट। It was a new world for them. It was a shock जो मैंने अपने पेरेंट्स को दिया था. Then my father just told me one thing, that if you are very certain हम्म। of that this is what you want to do, then हम्म। I will not stop you. पर एक बार देख लेना बेटा. So I said ठीक है. आई ट्राइड, बहुत ट्राई करा एंड एट द एंड ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा. एंड देन ही लेट मी गो, ही जस्ट लेट मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू. सो हियर आई एम द ओनली नॉन डॉक्टर ऑफ माय फैमिली, नॉन मेडिको. माय सिस्टर wanted to go for medical obviously, so she went for BDS. She is a dentist and my parents are ओके। doctors. I am the only non medico. So सब पूछते हैं कि how did you achieve this feat? ऐसे सीधे मेरे पापा को बोला है, यानी सेट कि ठीक है बेटा जो करना है करो.
पर जो करो अच्छे से करो, दिल लगा के करो, Correct, correct. सो दैट टुमारो आई कैन नॉट टेल माय पेरेंट्स कि भैया आपके वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। एंड दिस इज No, that's a good message what you are spreading to others, ma'am. That the only thing your father said was, "जो भी करना है करो, but अच्छा दिल करो." लगा के करो। That's a very good Yes, message. What parents that should is what listen to I you. tell my child also. My parents wanted my son to go for sciences. Hmm, आई वांटेड हिम टू, बिकॉज आई नो वो लंबा आंसर नहीं लिख सकता, तो मैंने कहा तुम आर्ट्स तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, आर्ट्स में थोड़े correct. लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तुम तो 2 लाइन के आंसर में खत्म कर दोगे। अगर हाँ, ग्लोबलाइजेशन पूछा है आर्ट्स में, तो वो 2 लाइन की डेफिनेशन में 10 मार्क का आंसर खत्म करके आ जाता था, कि और मेरे से लिखा ही okay. नहीं जाता। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आर्ट्स भी बेकार है, तुम वहां पे रोज मेरी पेशी लगेगी। तो Hmm, साइंस है या कॉमर्स है, तुम चूज करो, किसे साइंस नहीं करना ऐसा मत करो। आर्ट्स correct. मैंने कहा तुम्हें आंसर लिखने नहीं आते, या तो तुम लिखना सीख लो, या फिर तुम्हारी Hmm, मर्जी। तो ही सेड मैं कॉमर्स करूंगा। देन ही वेंट फॉर कॉमर्स, देन एवरीबॉडी थॉट कि चलो ये सीए करेगा। देयर ही अगेन सेड कि मैंने कुछ नहीं करना, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। होटल okay. मैनेजमेंट में मैंने कहा तेरे को खाना अच्छा बनाना आता है तो खाने में जाएगा, कहता नहीं मेरे को फ्रंट ऑफिस में करना है। सो आई जस्ट टोल्ड हिम वन थिंग, देन आई टोल्ड हिम कि बेटा आर्मी के एग्जाम्स है, वी आर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। मैंने कहा लाइफ Hmm, सेट, इफ यू आर इन द आर्मी ठीक है, वॉर वगैरह होती है, जाना है, हमारी एंजाइटी रहती है, बट यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू नो, yes, एक yes, सक्सेसफुल है। absolutely. तो इसे नहीं करना ऐसे ठीक है, बट एक काम करो जो फिर मेरे फादर ने बोला था, Hmm, जो करना है करो, पर जो करो अच्छा करो. 100% डाल के करो। कल को मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया या लाइफ खराब कर दी। इट इज योर लाइफ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम देयर फॉर सपोर्ट। इफ यू स्टम्बल, माई जॉब Yes, इज टू हेल्प यू अप, दैट इज correct, ऑल। करना correct. तुमने है। जैसे श्वेता एक पोएम थी ना खलील गबरान की, ऑन Hmm, योर चाइल्ड, आई वुड एडवाइज ऑल द पेरेंट्स ओवर है, मैं नहीं पढ़ूंगी अभी वो पोएम, बट यू प्लीज ओपन अप गूगल, खलील गिब्रान की ऑन चिल्ड्रन पढ़िए, hmm, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ पेरेंट्स को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे को मेरे फादर ने छोड़ दिया कि कर ले जो तुझे करना है, but जो करना है अच्छे से। सो आई केप्ट ऑन लाइक यू नो होनिंग माई स्किल्स, हर साल मैं कुछ नया करती थी जो मेरे अपने एडिशन, बिकॉज आई न्यू आई कांट फेल, दिस इज माई डिसीजन, yes, I can't fail in my decision, you know. I have to fight. I have to do it because ये मेरा decision है. I cannot थोपो this blame on anybody. So let your correct. child. आप लोगों ने भी पेरेंट्स को ये कहती है अपनी जिंदगी बना ली है, अब उसका टाइम है, करने दो उसको। Be Absolutely. Let them take charge of their life. You be their support system in whatever they do. But whatever at they. least try, or at least let them try to do something on their own. Exactly. So on this positive notes, I would say thank you to you, Shweta. Thank It's you so much, like ma'am. बहुत अच्छे time पे this all thing is happening, and I wanted to tell my audience also that she is a Karmaveera. She's working for the children's and she's a RNTalks Swami Vivekananda Karmaveera Awardee also this year. And heartiest congratulations to you, Shweta. Thank you And so much, ma'am. I really wish and I क्या बोलूं, I bless you that you keep on molding children's life and parents and counsel them for the better so that we have a stronger nation tomorrow. Absolutely, ma'am. Thank you for your blessings. Much needed. Much, and thank you for being here with us today. Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a good day. So, parents and my viewers, that was Shweta Davda for you. उन्होंने आपको काउंसलिंग टिप्स दी हैं, एग्जाम टिप्स दी हैं, मेंटल स्ट्रेस को कैसे तोड़ना है, मेंटल वेलबींग कैसे करनी है, पेरेंट्स को बताया है कि बच्चों के साथ क्या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, एंड नॉट ओनली दैट शी हैज टोल्ड यू हाउ टू seal it, how to seal the well-being with good diet.
एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि बच्चों की जो एंजाइटी होती है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है विद गुड न्यूट्रिशन, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड गुड सपोर्ट सिस्टम दैट पेरेंट्स कैन बी, राइट। सो बस इतना ही याद रखिए, आपका बच्चा कोई खिलौना नहीं है जिसको आप किसी के कहने पे तोड़ मरोड़ रहे हो, आपके इन लॉज के या पेरेंट्स के, बट ही इज योर चाइल्ड एंड ही इज योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो लेट योर चाइल्ड डिसाइड, आपके बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए कि वो आगे क्या करना चाहता है। और आपका और मेरा काम ये है कि हम वहां खड़े रहे अपने बच्चे के पीछे, पिलर बन के, सपोर्ट सिस्टम बन के, कि कभी हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो हम वहां पे है। अगर आपके बच्चे को ये पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी करना चाहूं लाइफ में, तो ट्रस्ट मी, he will do good only because you are there for him. So be there for your child, be his strength, be a boon in his life and not a bane. Don't pull him back, help him move forward. With that, I finish today's session. Thank you so much for joining RN Talks. We'll see you tomorrow, tonight only with Mrs. Ranjeeta Ashish. And मिलते हैं एक और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से तब. Do keep join us at 7 o'clock. We'll be there for you. Till then, tata.